board and auditors who have joined us for today's meeting. The meeting is being held through video conference in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI. Before we start the main proceedings of the meeting, let me introduce you to my colleagues on the board. Firstly, I introduce myself. I am Amitabh Mukherjee, Chairman and Managing Director of NMDC Limited. Now I request the other board members to kindly introduce themselves. Good morning to all shareholders. I am Vishwanath Suresh, Director Commercial NMDC. I am also a member of the Audit Committee, Risk Management Committee and CSR Committee. Thank you. Very good morning to all. I am Vinay Kumar, Director Technical on the Board of NMDC. I am a member of Risk Management Committee. Thank you. Good morning, shareholders. I am Joydeep Das Gupta, serving as Director Production on the Board of NMDC. I am also a member of the Risk Management Committee, Stakeholders Relationship Committee, and Corporate Social Responsibility Committee. Thank you. Director Personal, holding additional charge of Director Finance on the Board of NMDC. I am a member of Risk Management Committee, Stakeholders Relationship Committee, and Corporate Social Responsibility Committee. Thank you. Namaskar, shareholders. I am Sanjay Tandon, Independent Director of NMDC Limited. I am Chairman of Audit Committee, Risk Management Committee, and Stakeholders Relationship Committee. I am also a member of Nomination and Remuneration Committee. I am joining this annual general meeting from Chandigarh through video conference mode. Thank you. Namaste. I am Bharat Patil, Independent Director, NMDC Limited. I am Chairman of the Corporate Social Responsibility Committee and member of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. Thank you. नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह राव एनएमडीसी लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक हूं। मैं नामांकन और पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष हूं तथा लेखा परीक्षा समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का सदस्य हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। I am Patta Sahib from Bihar and Nalanda. I, Achal Kumar Sinha, most newly nominated Independent Director from Bharat Sarkar, Government of India, and I belong to Bihar. At present, I am a member of Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee, Stakeholders Relationship Committee, and again, thank you to all. I am Praveen Sekhar, Company Secretary of NMDC Limited, joining from the Registered Office of the company at Hyderabad. I extend a warm welcome to the 67th Annual General Meeting of the company. At the outset, I would like to welcome Shri Amitabh Mukherjee, Chairman and Managing Director, Shri Vishwanath Suresh, Director Commercial, Shri Vinay Kumar, Director Technical, Shri Joydeep Das Gupta, Director Production, Srimati Priyadarshini Gadam, Director Personal, holding additional charge of Director Finance. And I also welcome our Independent Director of the company, Shri Sanjay Tandon, Shri Mahendra Singh Rao, Shri Bharat Patil, and Shri Achal Kumar Sinha. Apart from them, we also have key executives and senior management joining from their respective locations. Statutory Auditor, Messrs. Verma and Verma, Secretarial Auditor, Messrs. B.R. Agrawal and Associate, Cost Auditor, Messrs. B. Mokhapadhyay and Company, Internal Auditor, Messrs. Tej Rajpal and Company, D. Hanumanta Raju, and officials of our RNTA, Messrs. Aarti Consultants Private Limited.
have also joined this meeting, and I extend a warm welcome to all of them. We have the requisite quorum present through video conference to conduct the proceeding of this meeting. Participations of members through video conference is being reckoned for the purpose of quorum as per the circular issued by MCA and Section 103 of the Companies Act 2013. In terms of the Article 52 of the Article of Association of the company, I would request Sri Amitabh Mukherjee, CMD, to take the chair and call this meeting to order. I call this meeting to order. I would like to state that the company has taken all feasible efforts under the current circumstances to enable members to participate through video conference and vote and attend the AGM. I now request Sri Praveen Shashekar, Company Secretary, to provide general instructions to the member regarding participation in this meeting. Thank you, sir. Members may note that this annual general meeting is being held through video conference in accordance with the Companies Act 2013 and circular issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI. Facility for joining this meeting through video conference or other audio-visual means is made available for the members on a first-come, first-served basis. The register of directors and key managerial person, the register of contract or arrangements has been made available electronically for inspection by the members during the AGM. Members seeking to inspect such documents can send their request to cs@nmdc.co.in through email. The company has received requests from few members to register them as a speaker at the meeting. Accordingly, the floor will open for those members to ask questions or express their views. It may be noted that the company reserves the right to limit the number of members seeking questions depending on the availability of the time at the AGM. In compliance with the MCA circular and SEBI circular, notice of the AGM along with the annual report 2024-25 has been sent only through electronic mode to all those members whose email addresses are registered with the company or depository participants. Further, the company has sent letters to those shareholders whose email addresses are not registered with the company or with the depository participants, providing them with a web link to the annual report hosted on the company's website. It is also informed that physical copy of annual report have been sent to the members who have requested for the same. The company has provided the facility to cast vote electronically on all resolutions set forth in the notice. Members who have not yet cast their vote electronically and are participating in this meeting will have the opportunity to vote during the meeting through the e-voting system provided by NSDL. Members can click on vote tab on the video conference screen to access this feature. All speaker shareholders attending the meeting are requested to keep their microphone off until they are invited to speak. Members are also requested to refer to the instruction provided in the notice or appearing on the video conference page to avoid any disturbance from background noise and ensure the smooth and seamless participation through video conference. Thank you very much. Now I request Sri Amitabh Mukherjee, Chairman and Managing Director, to address the shareholder. Thank you, Praveen. Dear shareholders, it is my honor to represent NMDC Limited, the largest and most respected iron ore mining company in India. As we reflect on the financial year 24-25, I am pleased to share with you our achievements, our vision, and the road ahead as we continue to stand at the forefront of India's journey towards greater progress, development, and sustainability. Iron ore is the lifeblood of India's infrastructure and industrial economy. Every ton we mine contributes directly to the nation's roads, railways, ports, factories, and homes. We are proud that NMDC's minerals help
build a physical and economic backbone of India. However, our mission goes beyond tonnage and output. At NMDC, we are committed to responsible mining. We understand that mining must serve broader national objectives of regional development, environmental protection, and mineral security. And hence, our operations are driven by scientific rigor, innovation, and the highest standards of integrity. We have consistently demonstrated that this is possible to achieve scale while staying environmentally and socially responsible. The financial year in review was marked by geopolitical shifts and dynamic global trade patterns, underscoring the growing significance of mineral security. In this landscape, NMDC responded with agility, strategic foresight, and focus on operational excellence, ensuring uninterrupted supply of high-grade iron ore to fuel India's robust infrastructure and industrial growth. Recognizing the need for diversification and international expansion, we established a strategic base in Dubai and advanced our operations in Australia, initiatives that align with India's priorities and extend our reach into global markets. Strengthening infrastructure was another core focus. We progressed into the final phases of construction of the slurry pipeline in Bailadila and doubling of the Kotha-Valsa-Kirandul rail line, expected to be commissioned soon. These efforts are designed to enhance efficiency, reduce carbon footprint, and improve supply chain agility. Every initiative, from logistics to product innovation and portfolio expansion, is guided by a clear goal to secure India's mineral future while contributing to global stability. In FY25, NMDC delivered a robust financial performance. Revenue stood at rupees 23,668 crores, driven by strong domestic demand and steady pricing, and consistent sales and volumes. Profit after tax rose by 18.8% to 6,693 crores, with EBITDA reaching 9,847 crores. Despite temporary industrial relation challenges, we maintained stable delivery and financial discipline. Strategic pricing and alignment with customer needs supported the healthy margins across segments. We also achieved a milestone in capital investment, recording rupees 3,715 crores, the highest capex in our history, with net worth rising to rupees 29,579 crores. NMDC reinforced its financial fortitude. In recognition of this performance, we declared an interim dividend of ₹2.30 rupees per share and recommended a final dividend of ₹1 per share, balancing shareholder returns with long-term growth investments. NMDC produced 44.07 million tons of iron ore and sold 44.40 million tons of iron ore in FY25, retaining a position as India's leading iron ore producer. Building on our strategic initiatives, NMDC produced around 6 lakh tons and exported 4.8 lakh tons of pellet under conversion agreement with KOICL, secured land in Visakhapatnam to develop a blending yard and pellet plant and ancillary facilities, while deploying a technology and an innovation wing and a public-private partnership policy to fast-track executions of CapEx projects. We are confident that these initiatives will converge to support our goal of 100 million ton production goal. In FY25, NMDC made headways in key innovation and infrastructure projects, including adoption of the fleet management system and commissioning of the rapid wagon loading system. Together, these efforts mark our transition towards a modern, sustainable, and future-ready mining ecosystem, laying the groundwork not just for next year, but for the decade ahead. At NMDC, environmental, social, and governance principles
are core to our operations and future vision. Our environmental management systems align with global best practices and are sustainable development policy ensures that ESG values guide every business decision. Our ambition to achieve net zero is progressing steadily, supported by renewable energy initiatives, green belt development, water quality monitoring, and adoption of energy efficient technologies. Progress in the social vertical was guided by the needs and aspirations of our host communities. The beneficiary ambit of NMDC's standout campaign, Balika Shiksha Yojana, was scaled up into FY25 to support the nursing education of 200 students. Building on this, NMDC collaborated with leading medical and plastic technology institutes in the country to open doors to technical education and sustainable employment for close to 600 students from Bastar, Chhattisgarh. This financial year also marks distinctive governance milestones as company's board approved certain foundational policies, ESG policy and ESG code of conduct, human right policy, supplier code of conduct, and biodiversity policy. The NMDC corporate governance framework ensures full legal compliance, transparent decision making, and active risk management, safeguarding stakeholder trust and long-term value. As we look to the future, our strategy places equal importance on business development and social impact. Strategic investments in capacity expansion, advanced technologies, and green projects will support our next phase of growth. In FY26, we are set to cross 50 billion ton production milestone, bringing us closer to 100 million tons goal. NMDC has already delivered its best ever Q1 performance in FY26 with a record volume of 11.99 MT, that's million ton production, and 11.52 million ton sales. Growth to the tune of 30% and 14% respectively over the CPLY. On the financial front, we declared a Q1 turnover of rupees 6,634 crores, which is 23% more than the first quarter revenue of FY25. We are grateful for the steadfast support of the Government of India and the Ministry of Steel in fostering a dynamic and innovation-led industry. I also extend my sincere gratitude to our employees, customers, partners, and regulatory bodies and the valued shareholders. NMDC stands tall as a symbol of India's industrial strength, social ambition, and sustainable vision. Together, let us continue to build an enterprise that paves the way for a Viksit Bharat. Jai Hind. I would like to state that the company has taken all feasible efforts under the current circumstances to enable members to participate through video conference and vote and attend the AGM. I thank all the members, colleagues on the board, auditors, and the management team for joining this meeting over video conference. I hope all of you are safe and are in good health. I now request Company Secretary to provide a summary of auditor's report and resolutions proposed in the notice of AGM.
Thank you, Chairman Sir, for your insight and inspiring addresses which effectively highlighted the prevailing economic scenario, iron ore market dynamics, the company's fiscal and financial performance, our initiative towards climate change, and the futuristic roadmap for growth and prosperity. I would like to inform that the Treasury Auditor, Messrs. Verma and Verma, had submitted unmodified audit report and it doesn't contain any qualification, reservation, or adverse remark for the financial year 2024-25. The Treasury Auditor's report on standalone financial statement and consolidated financial statement is available on page number 223 and 329 of the annual report. Further, CNAG White letter dated 6 August 2025 had given their comments on the standalone and consolidated financial statements, and the management reply of the same are annexed at Annexure 9A and 9B, respectively at page number 217 and 219 of the board reports for FY 2024-25. With the permission of members, the comments of the CNAG along with the management reply thereto may be taken as read. The report submitted by Secretarial Auditor, Messrs. B.R. Agrawal and Associates for the financial year 2024-25 does not contain reservation or adverse remark except observation relating to the composition of the Board of Directors with respect to inadequate number of independent directors, including women independent directors on the board. The report of Secretarial Auditors is included at Annexure 5 of the board reports at page number 198 of the annual report. The management reply to the observation of Secretarial Auditors form part of the board report, and same may be taken as read. Before we proceed further, I am pleased to bring to your notice that, as required under the Companies Act 2013, the company had provided you all the facility to cast your vote electronically on all resolutions set forth in the notice. Members who have not cast their vote electronically and who are participating in this meeting will have an opportunity to cast their votes through e-voting system provided by NSDL. Members may please note that there will be no voting by show of hand. As the notice is already circulated to all members and is available on the website of the company, I take the notice convening the meeting as read. We now take up the following ordinary and special resolution as set forth in the notice. We will open the floor for any questions by members after all the resolutions are considered. Ordinary business. Adoption of audited financial statements of the company for the financial year ended 31st March 2025. Serial number 2. To take note of the payment of interim dividend of rupees 2.30 per equity shares of the face value of rupees 1 each already paid, and approved the payment of final dividend of rupees 1 per equity shares of face value of rupees 1 each of the financial year 2024-25. Reappointment of Sri Vishwanath Suresh, DIN number 100599734 as a director of the company. Reappointment of Sri Vinay Kumar, DIN 101-72521 as director of the company. Serial number 5, to authorize the Board of Directors for fixing the remuneration of Treasury Auditor for the financial year 2025-26. A special business at serial number 6 to appoint Srimati Priyadarshini Gadam, DIN number 109-77645 as Director Personnel on the Board of the company. Serial number 7 to appoint Sri Amitabh Mukherjee, DIN 08265-207 as the Chairman and Managing Director of the company. Serial number 8 to reappoint Sri Sanjay Tandon, DIN 00484699 as non-official independent director on the board of the company. Serial number 9 to appoint Sri Mahendra Singh Rao, DIN
11112103 as non-official independent director on the board of the company. Serial number 10 to appoint Sri Bharat Babu Rao Patil, DIN number 01709981 as non-official independent director on the board of the company. Serial number 11 to appoint Sri Ashish Chatterjee, DIN 076888473 as government director on the board of the company. Serial number 12 to appoint Sri Achal Kumar Sinha, DIN 11186445 as non-official independent director on the board of the company. Serial number 13 to ratify the remunerations of the cost auditors of the company for the financial year 2025-26. Serial number 14 to appoint secretarial auditor of the company. Thank you, shareholders. With the permission of the chair, now I request moderator to take up the questions from speaker shareholders. Thank you. Dear shareholders, before we go live with the question and answer session, here are some points to note for your convenience. Kindly turn on your video when you are projected on the broadcast screen. Kindly unmute yourself and proceed to ask the question. Please mention your name, DP ID, client ID or folio number and the location from where you are joining. Each shareholder will have 2 minutes for their questions. To avoid repetition, the board will respond to all the questions at the end. Once you have asked your question, you can switch off the video and mute and continue to watch the proceedings. The board will be taking questions from the shareholders in 2 or 3 sets, depending on the numbers of questions. Members may also note that the company reserves the right to limit the numbers of members asking questions depending on the availability of time. Now, we request our first speaker shareholder, Yusuf Yunus Rangwala, to unmute himself and kindly proceed with the question. सर आपको आवाज आ रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग चेयरमैन सर, स्पीकिंग फ्रॉम मुंबई सर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है साहब? बिल्कुल आ रही है। सर पहले तो आपकी चेयरमैन स्पीच दैट वाज वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी नॉलेजेबल। रिस्पेक्टेड चेयरमैन अमित भाई और सेक्रेटरी मिस्टर प्रसाद प्रवीण भाई, अपना कंपनी सेक्रेटरी, उनके बारे में सर वी आर एज यू मेंशन आयरन मैन्युफैक्चर, वी आर नंबर 1 एज यू मेंशन इन द चेयरमैन स्पीच. Sir, we are manufacturing 6 lakh ton and we are exporting to many countries. Sir, I would one point. Sir, Coal India, जो कलकत्ता का कंपनी सर, वो अपना मेन कॉम्पिटिटर है. So they are also manufacturing and they are also exporting and we are also government company. So this we two government company are what competition we are facing with this government company? I would like to know. अपने में और कोल इंडिया में क्या कंपटीशन है सर, और कौन सी कंपनी के साथ में अपना कंपटीशन हो रहा है सर, मैं जानना चाहता हूँ. Sir, you are the respected chairman. As you mentioned, our factory in Visakhapatnam. Sir, can you arrange a factory in Visakhapatnam so that I can come to know how the production is going on? Sir, our company secretary sent me an annual copy. That is a very fantastic. I am very thankful to our Praveen bhai and also our board for declaring a twice dividend. Sir, आपने twice dividend दिया. Sir, मैं एक जानना चाहता हूँ, आपने analyst meet होते हैं सर बॉम्बे में. If there is an analyst meet, you please call us. This is a 67 annual general meeting. So at the time of 65, whether you declare a bonus, sir, I would like to know. आपने बोनस दिया था सर 2 साल पहले सर, आपने नहीं दिया है तो अपने पर रिजर्व भी अच्छे सर, आपने बताया वी हैव गुड रिजर्व, वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्री सर, और अपना सर रिजर्व भी अच्छा है सर. तिजोरी सर बहुत बढ़ गई है सर, तिजोरी खाली करो सर, हम भी बोनस के लिए आशा रखते हैं सर. और अपना आप हैदराबाद में बेचते हैं सर, अगर हो सके तो हम आपसे हैदराबाद आना चाहते हैं चेयरमैन सर, अगर पॉसिबिलिटी है आफ्टर द दिवाली. Can you arrange आपके साथ में छोटा गेट टुगेदर चाहिए चेयरमैन सर, अगर पॉसिबिलिटी है एनालिस्ट मीट हैदराबाद में होती है तो आप हमें बुलाइए सर. आई विल कम एंड मीट यू सर इफ पॉसिबल सर. आई विश यू गुड लक एंड मैं फुल सपोर्ट. अभी मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ. फूलों की खुशबू, कलियों की बात और चेयरमैन साहब का साथ, हमें सर विशिंग यू गुड लक. थैंक यू वेरी मच सर. 1 मिनट सर. थैंक यू सर. जय हिंद सर. वंदे मातरम. भारत माता की जय. थैंक यू यूसुफ भाई. Thank you. Now we request our next speaker shareholder, Kamal Kishore Jhawar, to unmute himself and kindly proceed with the question.
मेरा आवाज आ रहा है सर? इसकी तरह लिखेगा मैडम. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, we can hear you. ओके ओके, थैंक यू मैडम. चेयरमैन सर, ऑल ग्रेटिट्यूड, मेरा नमस्कार. सर, इस कंपनी में बहुत ओल्ड शेयर होल्डर हूँ, बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ. और आप हमारे चेयरमैन साहब, जो आप चेयरमैन इसकी पूरा डिटेल बताया, बहुत अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा लगा. तो मैं आपको मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ. और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का टीम बहुत बढ़िया है साहब. प्रवीण साहब का कभी भी मेल देते हैं, आंसर देता है हमारे को. कब मीडियम के टेम्परेचर काम देता है, मेल देते हैं. और हमारे को बैलेंस शीट भी सेकंड टाइम मिल गया साहब. इतना फास्ट वेरी सर्विस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, तो मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ. और सर, इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस रखे हम कहीं भी रहे मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. और आज से दशहरा दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ. और आपने हमेशा इंटरम यूनियन भी देते हैं, फाइनल भी देते हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, हमेशा डिविडेंड भी दे तो गवर्नमेंट को ज्यादा देगा, स्मॉल इन्वेस्टर को भी बेनिफिट मिलेगा. सो हम ये हमेशा गाइडेंस हमेशा ऐसी कंटिन्यू में रखे सर. और इसकी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस रखे. और अपना नेक्स्ट 2025-2026 में रेवेन्यू कितना हो सकता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर. और बाकी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. आपने जो बताया चेयरमैन, इसमें हमको बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. Thank you. Our next speaker shareholder, Subrat Sahu, has registered, however not joined. So we'll move on to our next speaker shareholder. Now, I request Om Prakash Kejriwal to unmute himself and kindly proceed with the question. Mr. Om Prakash. I'm Yes, audible? you are audible. Thank you, madam. Good afternoon, sir ji. नमस्कार. And good afternoon, everybody attending this AGM. Myself, Om Prakash Kejriwal, your equity shareholder from Kolkata. Thank you, sir ji, for providing the platform to speak something before you. Thanks to our Secretary Department for helping me registration as a speaker shareholder. Sir ji, this is my first AGM, only due to virtual. So if possible, please follow this virtual AGM in next year also, so that more and more investors from different parts of the world could join our AGM and express their views, and company could take benefit from their views, sir. Sir ji, firstly, I want to thank you people for two things. First, for giving bonus share in the 2:1 ratio, and second, for giving total dividend of rupees 3.30 on face value of rupees 1, in spite of difficult business environment. So our India is growing, and so our company is also growing. In consolidated account, our revenue has grown to rupees 23,905 crore. Previous year it was rupees 21,307 crore. And our EPS has grown to rupees 7.44 on face value of rupees 1. Previous year it was rupees 6.34 after adjusting bonus share. Sanjeev, what is your expectation for current financial year, that is 25-26, amid Trump tariffs and war-like situation everywhere? Sanjeev, what is your capex plan for next 2-3 years? Sanjeev, what is your opinion on Supreme Court judgment dated 25th July 24 and 14th August 24? It has created much contingent liability on our company. What is our planning to save our company from these liabilities? सर जी, हमारे पीएम जो है चाइना विजिट कर रहे हैं इस महीने के अंत में, तो इससे हम लोग का जो है एक्सपोर्ट कितना बढ़ेगा चाइना में, आयरन ओर का एक्सपोर्ट, ये थोड़ा बताइएगा. सर जी, आई गिव सजेशन फॉर CSR कमेटी. प्लीज यूज सम ऑफ CSR फंड to provide drinking water nearby our mining, nearby villages. And second request, sir, please use some of CSR fund for betterment of cancer patients, because we know after corona disease, 1 or 2 members of each family is suffering by the cancer disease. So I have few requests also. Please do remember the speaker shareholder at the time of festivals in the same manner as you remember your friends and relatives. At last, Sergi, please maintain your smile and be cheerful. We are always with you as a long-term investor. Thank you, Sergi. Thank you. Thank you. Our next speaker shareholder, Rishikesh Chopra, has registered, however not joined. So we'll move on to our next speaker shareholder.
Now I request Vinod Agrawal to unmute himself and kindly proceed with the question. Mr. Vinod Agrawal? Yeah, can you hear me? It takes time to join as panelist and then apna unmuting and all. It takes time, sir. And Chairman Amitabh Mukherjee, CFO Venkat Suvarlu, and CS Praveen Shekhari ji. Good afternoon now, sir. NMDC. Sir, I've gone to the annual report, sir. आपका रेवेन्यू 25,258 करोड़ का था, which is up by 3%. तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपने 4,602 कैरेट्स ऑफ डायमंड को माइन किए हैं सर इस साल में, तो इसका अपना सेल नहीं दिखाया है अपना, तो इज इट केप्ट इन स्टॉक फॉर फ्यूचर सेल की क्या है सर? दिस डायमंड जो आपने माइन किए हैं इस साल में, तो उसका अपना सेल नहीं दिखाया है, तो इसको अपना फ्यूचर सेल के लिए रखा है स्टॉक की क्या है इसका? और दूसरा सर, व्हेन यू डू लॉट ऑफ माइनिंग, तो अपना माइनिंग फॉर आयरन और के लिए अपन ज्यादा करते हैं, और उसके साथ में अपने को और दूसरा भी चीज मिल रही है, जैसे डायमंड भी करते हैं, तो उसके साथ में अभी टेस्टेड फॉर रेयर अर्थ एंड अदर, आजकल अपना बहुत सारी अपना डिमांड निकली है रेयर अर्थ, और उसके साथ में अपना क्या क्या कॉम्पोजिट निकल सकते हैं आयरन और के साथ में कुछ अपना टेस्टिंग करेंगे, तो उसके अंदर कुछ वेनेडियम निकले, कुछ ग्रेफाइट निकले, कुछ अपना ऐसा कुछ निकले। अपने 2 माइन तो अपन ने ली है अपना फॉर वेनेडियम एंड ग्रेफाइट के लिए आपने ली है, बट और भी अपना कहीं पर अपना इसके साथ में कहीं पर निकलता हो तो अपने तो फायदा ही होगा, और भी कोई केमिकल निकलते हो, मिनरल्स निकलते हो, तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी एंड माय कंट्री सर। आई कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल द अवार्ड दैट यू हैव रिसीव्ड एज मेंशन्ड ऑन पेज 34. I would like to know what is our capex plan for FY26. I'm thanking you, signing off, Vinod Agrawal. Thank you. Now we request Sujan Modak to unmute himself and proceed with your question. Hello, you can hear me? Yes, we can hear you. Yeah. Respected Chairman, other Board of Directors, and Sujan Modak, I am attending this meeting from my residence in Kolkata, sir. Amitabh Mukherjee, sir, namaskar. Namaskar. Sir, kaise hain, sir, aap? All good, thank you. Yeah, very nice, sir. Your smiling face, really, even in the our AGM books and all, really, it inspires us, really. And सर, दुर्गा पूजा के लिए, अभी आने वाला दुर्गा पूजा के लिए सबको मैं गुड विशेस देता हूं सर। एंड सर, हमारा कंपनी का जो रिजल्ट है परफॉर्मेंस है, वेरी गुड परफॉर्मेंस सर, एंड फॉर दैट आई रियली कांग्रेचुलेट आवर मैनेजमेंट एंड ऑल द वर्कर्स डूइंग वेरी हार्ड जॉब एंड कीपिंग आवर कंपनी इन a very good position sir. Sir, I have a few questions, sir. What are exactly the main challenges at this moment to keep our growth momentum continuous, if you can please tell us, sir? And sir, second thing is that, sir, ये जो अमेरिका से जो टैरिफ का आ रहा है और जो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जैसे चल रहा है, सर, इसका कोलैटरल इफेक्ट क्या है? एनी डैमेज हुए इन आवर कंपनी, और सब कुछ अच्छी चीज निकलेगा तो थोड़ा बताएंगे तो सर अच्छा रहेगा। अभी सर China now by force I think India is going under the Chinese umbrella, तो सर वहाँ से कुछ चिप इंपोर्ट ना हो जाए हमारा कंट्री में, तो वो भी एक प्रॉब्लम्स है, तो इसका बारे में थोड़ा बताइए तो सर बहुत अच्छा रहेगा सर। एंड और सर, ये हमारा कंपनी का जो चलता है इसमें सर, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए व्हाट आर द प्लान्स इफ यू आर थिंकिंग ऑन? एंड सर, आजकल सर हर जगह में एआई टेक्नोलॉजी है, तो हमारा कंपनी में और हमारा जो वर्क फोर्स इसमें है, इसमें एआई टेक्नोलॉजी का कुछ एब्जॉर्प्शन हो सकता है कि नहीं, थोड़ा बताएंगे तो सर बहुत ही अच्छा रहेगा। अमिताभ सर, हमारा कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर प्रवीण शेखर और उनका जो टीम इतना अच्छा इन्वेस्टर सर्विसेज देता है, मैं रियली आई वांटेड टू टेल यू सर, प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच, यू एंड योर टीम डूइंग वेरी गुड जॉब टू द इन्वेस्टर्स कम्युनिटी। Chairman sir, Mr. Praveen is no doubt one of our best officers of this company.
So nothing to add more. Over to you for further proceedings. Thank you, sir. Thank you. Our next speaker shareholder, Sakir Sayara, has registered, however not joined. So we'll move on to our next speaker shareholder. Now, I request Praful Chavda to unmute himself and kindly proceed with your question. आ रही है? Yes, we can hear you. चेयरमैन सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेरे साथी शोल्डर, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम प्रफुल्ल चावड़ा है। फर्स्ट तो मेरे 7 डायरेक्टर्स नए अपॉइंटमेंट हुए हैं ये साल में, तो इसको मैं सबको वेलकम करता हूँ। और मैंने 2 साल पहले सुना था गोल्ड माइन में भी अपना काम हो रहा है, गोल्ड माइन में भी करेंगे, तो वो काम कहाँ तक पहुँचे और कुछ गोल्ड के माइन में से गोल्ड निकालने का शुरू हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर। कंपनी का CRS कैसा चलता है वो हमने एजीएम रिपोर्ट में जाने, तो CRS के साथ साथ आप ऐसा भी काम करें कि जो सिटी के बाहर पानी जमा करने के लिए तालाब बोलते हैं, तालाब खुदाने का भी काम करे, ताकि गांव वाले को रोज का परेशानी न हो, साल भर पानी मिलता रहे, ऐसा भी करे। आजकल बोरवेल से पानी खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ सिस्टम भी लगाए सर। यूनिट विजिट, आप बेलारी का यूनिट विजिट कराइए। जो हमारे पुराने कंपनी सेक्रेटरी थे तो बार बार कहते थे वो जा नहीं सके पार्षद थे सब, तो यूनिट विजिट कराइए सर। एक कंपनी सेक्रेटरी की 2-3 आदमी ने तारीफ किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो स्पीकर का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हिसाब से स्पीकर को बुलाया गया है या किस हिसाब से बुलाया गया है, उसके आप चेक करें, खुद आप चेक करें तो पता चलेगा कि कौन सा स्पीकर ने कौन से टाइम पे स्पीकर रजिस्ट्रेशन किया और कब बुलाया गया, तो आपको कुछ नया कुछ जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा सर, थैंक यू सर। Thank you. Now I request our next speaker shareholder, Santosh Kumar Saraf, to unmute himself and kindly proceed with the question. Mr. Santosh, kindly accept the prompt on your screen, please. Hello? Mr. Santosh, yes, we can hear you. एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, माननीय सभापति जी, उपस्थित निदेशक मंडल के सदस्य, अधिकारीगण और कर्मचारीगण, मैं संतोष कुमार साहब कड़ता से आप सभी को राम राम कहता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं उन कर्मचारी भाई बहनों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिनकी कड़ी मेहनत का फल है कि आज हमारी कंपनी इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है। उन कर्मचारी के साथ साथ उनकी फैमिली का भी आभार प्रकट करता हूँ जो सदा बैकबोन के रूप में उनके साथ में खड़ी रहती है, जिससे पूर्ण क्षमता जो हमारी कंपनी में योगदान देते हैं। मैं सेक्रेटरी और उनकी टीम का भी आभार प्रकट करता हूँ जो सदा हमारे टच में रहते हैं, हमें स्पीकर नंबर कितना इस आदि बारे में हमें अवगत कराते हैं। सर, बड़े दुख की बात है कि आपने इतनी अच्छी बैलेंस शीट दे दी हमें, और आपकी फाइनेंस में इतनी अच्छी बैलेंस शीट दी कि हमारे लिए कोई प्रश्न ही नहीं है पूछने के लिए। मैं क्या पूछूं, चेयरमैन से मुलाकात भी करनी है, प्रश्न कुछ है नहीं कि सब कुछ आपने अपनी बैलेंस शीट में दी दिया, सब आपने अपने वक्तव्य में बता दिया। तो आपकी फाइनेंस शीट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अगले साल एक आध पॉइंट हाइडन कर दे और हमें बता दें ये पॉइंट हाइडन क्या, उसके बारे में चेयरमैन से प्रश्न कर सकें। जब मीटिंग में आए तो चेयरमैन से एक तो प्रश्न नहीं करे तो अच्छा नहीं लगता सर। ये तो ऐसी बात है, फिर मैं एक तो प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, उसको अन्यथा मत दीजिएगा। ये तो ऐसा है कि भोजन बहुत अच्छा बना, फिर भी पूछ रहा हूँ कि 5 सुपारी है कि नहीं, इस तरह की मेरे है। तो मैं जानना चाहूँ अपनी कंपनी की EGS रेटिंग क्या है, उसका स्कोर क्या है, और उसका स्कोर अच्छा तो उसको हमारी कंपनी के लिए किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं, और अभी जो टैरिफ लागू हुआ उसका हमारी कंपनी पे कितना इफेक्ट आएगा, उससे बचने के लिए हमने क्या कदम उठाया है। ये 2 प्रश्न है। काफी अच्छे बैलेंस शीट दी, उसके लिए फिर एक बार CFO और उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूँ
और बहुत उनसे रिक्वेस्ट है अगले साल एक आध तो पॉइंट स्पीकर के लिए भी छोड़ दें, जिससे चेयरमैन से का जवाब मिल जाएगा, आपका काम भी पूरा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। सर आज फाइनेंशियल 25-26 की शुभकामना देता हूँ और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ फाइनेंशियल 25-26 हमारी कंपनी के साथ साथ हमारे जितने भी डायरेक्टर भाई बहन हैं उनके लिए हेल्दी वेल्दी और परफेक्ट सेफ्टी के साथ निश्चित होगा। सर आने वाले त्यौहार राष्ट्र त्यौहार आपके वसंत त्यौहार की भी शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये त्यौहार आपकी हमारी जिंदगी में खुशियाँ लेके आएंगे। मैं मॉडरेटर का भी आभार प्रकट करता हूँ काफी सर्विस देने के लिए सर। और सर सीएमओ साहब को रिक्वेस्ट करा अगले साल हमें एक आध पॉइंट दीजिए तो हम पूछेंगे। जय धन्यवाद, राम राम। Thank you. Now we request our next speaker shareholder, Suresh Chand Jain, to unmute himself and kindly proceed with the question. Mr. Suresh, please unmute yourself and kindly proceed with your question. आवाज आ रहा है? We can hear you, sir. आवाज आ रहा है? Yes, you are audible, sir. आदरणीय चेयरमैन सर, उपस्थित सभी डायरेक्टरगण और शेयर होल्डर साथियों, सर इस कंपनी का मैं पुराना शेयर होल्डर हूँ। पहले 10 पेड अप का था, उसके बाद में 1 पेड अप खाता हुआ है। मैं 10 पेड अप के अंदर भी था। सर मैं जब भी मैं रजिस्ट्रेशन कर दिया था, जैसा प्रभुल चौड़ा जी बोले, मैं जब भी कर दिया था सर, मेरा एकदम पीछे नंबर आ गया। आज मैं 75 इयर्स का हूँ, खाली देखते देखते आंखों में से पानी चालू हो गया है सर। और सर मैं 85 गोल्डन जुबली के ऊपर आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ मोतियों की माला के साथ। आप पुराने फोटो देखे तो भी पहचान लेते, जैसा पार्थ सारथी साहब इसके पहले भी मैं उनको कहा था साहब एकदम पीछे के नंबर आ गए। और हैदराबाद के अंदर कई मीटिंग थे सर, और मीटिंग और उसके बाद इन्वॉल्व नहीं, जैसा अभी प्रॉब्लम आया वैसे जब भी प्रॉब्लम आ गया था सर। और सर बरसात के दिन है, थोड़ा आवाज के अंदर प्रॉब्लम है सर, जिसके से मैं हल्का बात कर रहा हूँ। और सर आपने जो कंपनी की रूपरेखा हमारे सामने रखी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी भाषा के अंदर आपने कंपनी के बारे में जो जानकारी दी, आपको तथा आपकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। और बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते हुए आप आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि आपने चेयरमैन स्पीच के अंदर पूरी जानकारी दे दी, और जो बोलने वाले स्पीकर थे उन्होंने भी अपनी बात रख दी है सर। और बस आपने जो बोलने का शुभ अवसर मुझे प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। Thank you. Now we request our next speaker shareholder, Bharti Saraf, to unmute herself and kindly proceed with the question. Respected Chairman, distinguished board members, and my fellow shareholders, I am Bharti Saraf, a shareholder from Kolkata. At the outset, I would like to express my appreciation to the board and the management team for their consistent commitment and hard work in navigating the company through an evolving business landscape. Sir, I have just one question for you. The question is, what are the primary areas where the company plans to invest its capital expenditure in the current financial year? Lastly, I would like to extend my best wishes to the board, management, and all the employees for continued success. Have a great year ahead. Thank you. Thank you.
Now I request Jaideep Bakshi to unmute himself and kindly proceed with the question. Very good afternoon, Chairman and Board of Directors. Myself, Jaideep Bakshi, connecting from the city of Kolkata. Sir, your initial speech was very much informative and many questions have been raised, so I don't want to repeat them. Just want to know how we plan to move forward in the future and with the Government of India initiative on Make in India and Viksit Bharat, all this thought process. And what is our thought regarding the green energy implementation and carbon footprint reduction? Kindly share that and wish the company all the best in the coming years. Thank you, sir. Thank you. Now I request our next speaker shareholder, Bhavesh Patel, to unmute himself and kindly proceed with the question. Also get a feel of what your organization. Hi, very good afternoon to all. I am Bhavesh Patel from Pune. It is great to be attending NMDC's AGM and engage with Chairman and MD Sir Amitava Mukherjee, Company Secretary Praveen Shekhar, and entire leadership team. I want to thank the Company Secretary and Investor Services team specifically for great support. My key strategic questions are as follow. Number one, given the significant capex planned for getting to 100 million metric ton capacity, what is the company's long-term strategy to fund this capex? What is the target debt to equity ratio that we are thinking? Second question is on the dividend policy. Do we expect any change in the overall dividend amount that we paid out per year in light of the large capex that we are planning? Question number 3 is, what new technology or operational improvement NMDC is implementing to enhance efficiency and reduce cost across its mining and processing units? Fourth question is, iron ore market has been volatile recently with price dropping and then coming back up. What is our progress in terms of moving to formula-based index-linked pricing model that Chairman Sir you had mentioned earlier? And this will reduce price lag. And also with the global trend towards green steel and associated demand for high-quality iron ore and pellets, how is NMDC adjusting its product mix? Once again, thank you for the opportunity and looking forward to great future for all shareholders as well as all stakeholders. Special thanks to all the employees of NMDC who are making this dream of profitable growth to all of us. Best wishes for upcoming holidays. Looking forward to your guidance as well as direction in terms of the questions I've raised. Thank you very much and best wishes. Thank you. Our next speaker shareholder, P. Jayachan, has registered however not joined. So we'll move on to our next speaker shareholder. Now I request J. Abhishek to unmute himself and kindly proceed with the question. Mr. Abhishek, please accept the prompt on your screen. Mr. Abhishek, please accept the prompt on your screen, unmute yourself and proceed ahead with your question. As there is no response from the connection, so we'll move on to our next speaker shareholder. Now I
request RP Tulsen to unmute himself and kindly proceed with the question. Our next speaker shareholder, RP Tulsen, has registered, however not joined. So we'll move on to our next speaker shareholder. Now I invite Vivek Rakholia to unmute himself and kindly proceed with your question. Very good afternoon. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Thanks a lot for the opportunity, everyone. I had 3 questions. Firstly, given the gap between NMDC's domestic ore prices and international benchmarks, do you see any scope for domestic prices aligning more closely with the global trends, especially with steel demand firming up in India? Secondly, is NMDC seeing any shift in demand preference from fines to pellets from secondary steel makers? And how do you see the pellet premium evolving domestically? And lastly, with pelletization capacity expanding rapidly in central and eastern India, do you see a risk of pellet oversupply? And how is NMDC positioning itself in terms of beneficiation and pellet strategy? Thanks a lot. Have a very good day. Thank you. Our next speaker shareholder, Sanjog Saraf, has registered, however not joined. And that was the last speaker shareholder for today. Thank you for all the questions. With this, we conclude the question session from all the shareholders. While the management gears up to provide the answers to the questions, I request our team to play the corporate video. NMDC is the backbone of the industry in India. We are the torchbearers of responsible mining for over 6 decades. Welcome to our world. The Western Ghats holds a treasure as old as the Indian subcontinent. Iron ore. In 1977, NMDC commissioned the Donimalai Iron Ore Project. Kumaraswamy was commissioned in 1991. Exploration is a ceaseless activity. Diamond tip drills draw out core samples. Each sample is carefully analyzed. Each sample has a story to tell, has an address that will guide us forward. Extraction is a carefully choreographed operation. Explosive experts execute precisely controlled blasts to bring out the iron ore. Like lumbering beasts, the giant excavators break, scrape, and lift the ore. The shovel works ceaselessly, feeding the run of the mine to the dumpers. Like clockwork, the dumpers move on a circular journey between the shovels and crushing plant.
hundreds of metric tons of pressure awaits in the crushing plant. Crushing the ROM, preparing it for its onward journey. High above the forest floor, the conveyor belts carry the material from the Kumaraswamy mines to the Donimalai processing plants. The engineers monitor the ore as it rides along. The screening plant rings with the tumbling and breaking of the ore. In constant motion, it cascades from one level to another, separating the fine material and the lumps. Safety and efficiency form the double helix of all operations in NMDC. In the pellet plant, the roll of the ball mill reverberates to the watchful eyes of the engineers. All parameters okay? All okay from the side? The synchronicity between man and machine is harder. Our sustainable mining practices have earned most of our mines the 5-star rating from the Indian Bureau of Mines. We are one of the most mechanized and low-cost iron ore producers internationally. At 42.15 million metric tons per year, NMDC is the largest producer of iron ore in the country. Internationally, we are the 8th largest iron ore producer. Mining can be a life of tough days and isolation. So, a township has been built for the NMDC families of the Donimalai and Kumaraswamy operations. Ecological sustainability is hardwired into our roadmap. 3 million saplings have been planted to reforest the hills that have given this nation so much. Every day a new journey starts. Every day we step forward with renewed zeal, for we have a promise to keep to our nation and to our people. Jai Hind. NMDC is the backbone of steel industry in India. We are the torchbearers of responsible mining for over 6 decades. Welcome to our world.
Deep in the hills of central India lies a vast treasure with the power to shape our nation's destiny. Here lies the world's richest iron ore, hematite. Since 1968, NMDC has been extracting this precious resource and providing the enriched purified ore to steelmakers across the country. Steel, the sinews of a nation, are made of steel because steel is required for every imaginable facet of nation-building activity. The processes involved in the extraction and purification need precise, meticulous attention to detail, and by seasoned and experienced engineers who are the bedrock of NMDC. Braving the mist, the cold, the heat, and the dust, our team works undauntedly. The ore is carried to the crushing plant with clockwork precision. The crushed ore is carried by overhead conveyor belts to the screening plant. Now begins a carefully controlled process of screening and beneficiation. What you see here is among the most mechanized and cost-efficient units to be found anywhere in the world. All our products, lump ore, CLO, bila-sized ore, and fines, bear NMDC's stamp of quality, for which we are known for the past 5 decades. We are the largest producers of iron ore in the country and the 8th largest in the world. Our sustainable mining practices have earned our mines the coveted 5-star rating from the Indian Bureau of Mines several times. This has helped make NMDC into a Navaratna company, a prestigious recognition given only to the top-notch public sector undertakings that deliver quality and profits in a sustained and socially responsible manner. The day rolls by, the excavators keep sweeping, the conveyor belts keep rolling, and the wagons keep moving. Our townships, homes, sports and recreation spaces are designed to provide relief and relaxation from a hard day's work. But our commitment extends far beyond our staff and their families. We care for the people of these hills. And many young men from these environs have become engineers and joined our ranks. We are deeply passionate about conservation, and we are committed to give back more than Thank you. We will now begin the answers to the questions. Now, I hand over to the chairman to respond to the queries of the shareholders. Over to you, sir. Thank you.
यूसुफ रंगवाला साहब ने पूछा था बोनस शेयर्स के बारे में, तो मैं ये अश्योर करना चाहूँगा that the board will consider it at the appropriate time. Recently, we have given out, as you have mentioned, bonus shares of 2:1, and the next issue would be considered by the board at the appropriate time. Kamal Kishore Chhawar साहब ने पूछा था expected revenue in the FY26, तो that we expect that कि हमारी revenue जो है करीबन 29,000 से 30,000 करोड़ के बीच में, that's 29,000 to 30,000 के आसपास, that is the revenue that we are expecting. And संतोष कुमार सराफ जी ने आप करंट ESG रेटिंग के बारे में पूछे थे, तो हमारी अभी सस्टेनेबिलिटी की जो रेटिंग है वो 38.3 है, जो कि कुछ दिन पहले तक 26 हुआ करती थी, तो ये थोड़ी सी डिटोरिएट की है, बट हमने गैप एनालिसिस किया है और उम्मीद करते हैं कि ये इमीडिएटली नेक्स्ट क्वार्टर तक इम्प्रूव हो जाएगी, बिकॉज इन्होंने अपनी कुछ पैरामीटर्स जो है इवैल्यूएशन पैरामीटर्स कुछ चेंज किए हैं, जिससे कि हमारी रेटिंग थोड़ी गिरी है, लेकिन वी विल बी डूइंग मच बेटर इन दी वेरी शॉर्टली. S&P के जो इंडेक्स है उसमें हमारी काफ़ी इम्प्रूवमेंट रही है फ्रॉम 20 to 34. In S&P we have really improved from 20 to 34, which is a huge substantial increase. In MSCI our current rating is CCC, but we have a robust gap analysis mechanism that has been set up, and this is a completely independent department of sustainability department which is looking into this. And very shortly we will have the best ESG ratings in our industry in the country, and one of the best in the world. Jaideep Bakshi साहब ने पूछा था कि how to move forward in future, what is our strategic plan? That is in the public domain, that we are going to about 100 million ton from the existing mines that we have. We are also pursuing with the government of India, based on our credential of excellent mining, to allot us more mines. And if the government is kind enough to allot us more mines, our production would go up beyond 100, but from the existing mines it will be 100 million ton. We also have a board approved policy of diversification and international strategy, which mandates that at least 10% of our revenue should come from beyond the borders and from minerals other than iron ore. We are working towards that. We are evaluating assets towards that, and we hopefully in near future this company will be a multi-mineral and multi-national company in the foreseeable future. Mr. Bhavesh Patel had asked for the capex funding of for the funding plan that we have of around 60 to 70,000 crores towards our journey towards 100 million ton. Most of this will be financed through internal accruals from the operational cash flows, and also a substantial part is going to be financed on the off-balance sheet on the asset-light model, because we now also have what is called an NPP policy or NMDC partnership policy, where we are floating tenders for the private sector to participate participate in the capital, and it will be on a revenue expenditure model that some of these assets will be operated. So accordingly, we expect that the debt equity ratio, the balance sheet would continue to be unleveraged even in future due to the even for the capex that we are envisaging as of now. Regarding dividend policy, as you are aware, that the government policy, the government companies come under the dividend policy of the government, which mandates at least 30% of PAT or 4% of net worth to be given out as dividend, which we have been complying consistently every year. The exact quantum of the dividends would be deliberated and appropriately decided by the board based on what the margins we are achieving this year, as well as our capex plan commitments. And for the rest of the issues raised during
the question and answer. I would request my colleagues, starting with the Director Commercial, Mr. Vishwanath Suresh, to address the other queries that were raised. Thank you so much. धन्यवाद सीएमडी साहब। सबसे पहले तो डायमंड के बारे में विनोद जी ने एक प्रश्न उठाया था। तो डायमंड इस साल प्रोडक्शन हुआ है और अगले साल इस साल 25-26 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसका सेल्स पर मिल जाएंगे। प्रफुल्ल जी ने गोल्ड के बारे में आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज सर? नहीं, पहले भी मैंने बोला है, सीएमडी साहब की भी आवाज बहुत सबड्यूड थी, आपकी भी है। उससे पहले जब चल रहा था वो ठीक चल रहा था। मैंने मैसेज भी सबको किया है, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। अभी आ रही है सर आवाज? We can hear you, sir, loud and clear. Okay, thank you. So the first question that was raised was regarding the diamond. Diamond के बारे में जो सवाल विनोद जी ने उठाया था, तो उसके बारे में ये बताना है कि प्रोडक्शन अभी चालू हुआ है और 25-26 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम पहला सेल्स भी शुरू करेंगे। जहां तक गोल्ड का सवाल है, सोने का सवाल है, प्रफुल्ल जी ने एक पॉइंट रेज किया था। इसका अलॉटमेंट जो है वो सरेंडर हो गया है, जैसे कि आपको कुछ समय पहले हमने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी बताया था। ये इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन था गोल्ड का, उसमें हमको वायबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो हमने उसका सरेंडर कर दिया था। भावेश जी ने और बाकियों ने भी रेज किया था इंडेक्स लिंक प्राइजेस के बारे में। आपको हम एश्योर कर दें कि इंडेक्स लिंक प्राइजेस से ज़्यादा ये है कि हमको मार्केट के हिसाब से, जो हमारे इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे प्राइजेस अलाइन रहते हैं, उसमें इंटरनेशनल इंडेक्सेस का भी बड़ा भाग रहता है। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना प्राइजेस फिक्स करते हैं और जैसे जैसे कि इंपोर्ट्स बढ़ें या हों, तो हम और ज़्यादा इंडेक्स लिंक प्राइजेस की ओर जाएंगे। जहाँ तक फाइन्स और पैलेट्स के बारे में एक पॉइंट रेज किया था, विवेक जी ने रेज किया था कि एनएमडीसी भी, जैसे आपको पता है, एनएमडीसी भी करीब 7 लाख टन के आसपास इस साल में 24-25 में हमने सेल किया था 6.9 के आसपास, जिसमें से कि 4.8 लाख टन हमने एक्सपोर्ट किया है। और इस साल भी करीब 3 मिलियन टन के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम प्रोड्यूस करेंगे। और उसमें से जो केआईसीएल और दोनीमले मिलाकर है, और उसमें से करीब 1 से 1.5 मिलियन टन के आसपास हम एक्सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक पैलेट्स का सवाल है, हमारे और पैलेट प्लांट्स भी इस साल, जैसे नगरनार में पैलेट प्लांट भी इस साल शुरू हो जाएगा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे भी हम उस गैप की भरपाई करेंगे। हाई ग्रेड पैलेट्स का एक जिक्र हुआ था, तो हम भी हाई ग्रेड पैलेट्स की ओर अग्रसर हैं। हम अभी उसमें भी ऐड करेंगे, हमारा वॉल्यूम्स उसमें भी बढ़ेगा। यूएस टैरिफ्स के बारे में जो डिस्कशन हुआ था, क्विकली मैं आपको जस्ट बता दूं कि डायरेक्टली एनएमडीसी पर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे यूजर इंडस्ट्रीज जितने भी हैं उन पर इम्पैक्ट होगा। तो जैसे कि एज ए कंट्री वी आर अप्रोचिंग दिस दैट इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक डिमांड as well as increasing our production so that we can cut our price costs substantially, उसी की ओर हम अग्रसर हैं। और क्योंकि आयरन ओर एक फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्री है, तो जितना हम अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमारा कॉस्ट कम होगा। सो वी कैन एश्योर यू दैट वी विल रिमेन हाईली कॉम्पिटिटिव। थैंक यू। आई विल रिक्वेस्ट डीटी सर टू टेक ऑन द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स। धन्यवाद डायरेक्टर कमर्शियल सर। ओम प्रकाश केजरीवाल जी, विनोद अग्रवाल जी और भी कुछ साथियों ने कैपेक्स के बारे में पूछा था कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में कैपेक्स की क्या योजना है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग अराउंड 4,000 करोड़ इस ईयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर भी अराउंड 6,000 to 8,000 करोड़ और उससे ज़्यादा करने का प्लान है हमारा। और हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम कैपेसिटी एडिशन करें और नए टेक्नोलॉजी को लाएं, जिससे हमको 100 मिलियन टन की ओर अग्रसर होने में फायदा मिले, हम उस पर पहुंच पाएं। इस तहत हम लोग स्क्रीनिंग प्लांट, एक एडिशनल स्क्रीनिंग प्लांट लगा रहे हैं किरंदुल में, और स्लडी पाइपलाइन फेज 1 का कंप्लीशन होने वाला है, जिसमें बेनिफिशिएशन प्लांट है बचेली में, स्लडी पाइपलाइन है बचेली से नगरनार तक, और पैलेट प्लांट हम लोग एक स्टार्ट करने वाले हैं नगरनार में। और इसी तरह दोनी मलाई में एक स्क्रीनिंग प्लांट 2 लगा रहे हैं हम लोग, जो एडिशन होगा, और क्रशिंग प्लांट हम लोग हायर कैपेसिटी का 14 और 11 से किरंदुल में लाने वाले हैं। स्टॉक पाइल का कवरिंग करेंगे और ऑटोमेटिक सैंपलिंग सिस्टम की भी
प्लानिंग है हम लोगों को लाने का, जिससे हमारे सैम्पलिंग सिस्टम में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। अब मैं कि आगे की बात बताएं। सभी को फिर से एक बार नमस्कार। जो क्वेश्चंस आए हैं, ओम प्रकाश साहब ने क्वेश्चन किए थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 24 में आया था उसका हमारे आपका कंपनी का ऊपर में क्या इम्पैक्ट है। तो इस विषय में आप लोग जानते हैं कि ये जजमेंट आया था 25/7/2024 को, एंड उसमें आया था कि रॉयल्टी और टैक्स को डिफरेंशिएट किया गया था। बोला गया था अपार्ट फ्रॉम रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है। हाउएवर एज ऑफ नाउ हमारा ऊपर इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। एक स्टेट में एक बिल पारित हुआ था, बट वो अभी बिल रिटर्न हो गया, हैज बीन रेफर्ड बैक टू प्रेसिडेंट। सो एज ऑफ नाउ वी डोंट सी एनी इम्पैक्ट ऑफ दैट। सेकेंड वेरी गुड क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन सुजन मोदक साहब पूछे थे एआई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एनएमडीसी में आपका कंपनी में क्या हो रहा है, और भवेश पटेल साहब भी पूछे थे सिमिलर क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी क्या हम लोग अपना रहे हैं जो हमारा एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, कॉस्ट को घटाएगा। रिगार्डिंग दिस वी वुड लाइक टू सी, आपको एनुअल रिपोर्ट में भी मिलेगा, हम काफी सारा डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट कुछ हमारे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गए हैं और बहुत सारे अभी इम्प्लीमेंटेशन में हैं। खास करके मैं बोलना चाहूंगा कि एफिशिएंसी और इसको घटाने के लिए सबसे बड़ा जो हमारा काम है कि हम जितना मशीन्स, इक्विपमेंट, माइनिंग इक्विपमेंट अभी खरीद रहे हैं, ये सब बहुत ही द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी का साथ में, विथ सेंसर बेस्ड फीचर्स, विथ ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर, जिसमें हमारा लागत जो फ्यूल एफिशिएंसी सबसे बेस्ट हो और जिसका सस्टेनेबल माइनिंग में हेल्प हो सके, उस तरह का मशीन हम मंगा रहे हैं। साथ ही साथ कई सारा डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट हम लोग लिए हैं, उसमें खास करके एक है ब्लास्ट होल ऑप्टिमाइजेशन, जो माइनिंग का एक एक्सप्लोसिव का मेन कॉस्ट और फ्रैगमेंटेशन को डील करता है। वो लाने से हमारा एफिशिएंसी ऑफ माइनिंग और ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरा भी क्षेत्र में हमने कई सारा जैसे इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, इनवॉइस इवेल्युएटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, सीएसआर में हम इसको प्रयोग किए हैं। एआई को कहीं पर भी सीएसआर का काम हो रहा है तो पहले का फोटो बाद का फोटो जज करके अपने आप हमको उसका डेवलपमेंट, उसका प्रोग्रेस पता चलेगा। तो इस तरह से कई सारा प्रोजेक्ट हम लोग लिए हैं जो हमारा एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और कॉस्ट को भी घटाएगा साथ साथ। एक सवाल था ग्रीन एनर्जी एंड कार्बन फुटप्रिंट पे श्री जयदीप बख्शी साहब का। तो अभी सीएमडी साहब ने हमारा ईएसजी रेटिंग आपको बता ही दिया है, जो कि एक एवरेज रेटिंग है। हम लोग गैप को फुलफिल करते हुए इस रेटिंग को अभी बढ़ाएंगे। इस विषय में हम लोग रिन्यूएबल जनरेशन जो है 10.5 मेगावाट ऑफ विंड प्रोजेक्ट, ये नेट जीरो स्टडीज और शेपिंग ऑफ फ्यूचर रिन्यूएबल कैपेक्स भी हम लोग कर रहे हैं। इनोवेशन सिस्टम लाइक रोपकॉर्न एंड इन-पिट क्रशिंग भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी, leveraging ERP and digital monitoring for real-time energy optimization, water conservation और circular economy पे हम लोग काम कर रहे हैं, higher mine water recycling, minimizing fresh water withdrawal, implementation of rain water harvesting and treated water reuse for dust separation, green belt and ore processing. इसके साथ वेस्ट में भी काफी सारा काम हमारा चल रहा है, जो हमारा R&D सेंटर में भी कुछ है, जो वेस्ट को हम लोग किस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी में यूज कर सके। तो इसका जवाब ये रहेगा। Thank you very much from my side. Rest of the questions will be taken by Director HR with additional charge of Director Finance, Madam. हेलो, सभी को फिर से मेरा नमस्कार। दो शेयर होल्डर्स सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन नियर बाई विलेजेस एंड ड्रिंकिंग ऑफ वेल्स के बारे में जानकारी चाह रहे थे। इसके बारे में मैं बताना चाहती कि पिछले 10 साल में हम लोग 53 करोड़ स्पेंड किए हैं और आगे भी हम लोग इसके लिए CSR फंड से कंट्रीब्यूट करेंगे। और दूसरा सवाल था कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में और NMDC का CSR के तहत एक्सपेंडिचर। और इसके लिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 2 मेजर वर्क्स टेकअप किए थे। इसमें एक है कि मोबाइल कैंसर डिटेक्शन व्हीकल लिए हैं, उसके लिए कंट्रीब्यूट किए हैं। पीरियोडिकली ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स के सराउंडिंग एरियाज में कैंप्स लगाते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं।
और दूसरा है हम लोग एक हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में किचन का एस्टेब्लिशमेंट और उसका जो सामग्री है उसके लिए कंट्रीब्यूट किए हैं। ये हॉस्पिटल है शंकर कैंसर हॉस्पिटल इन बेंगलुरु में, एक बहुत अच्छा सा प्रीमियर हॉस्पिटल है साउथ इंडिया में। आगे भी आप लोग जो सुझाव दिए हैं उसको ध्यान में रखते हुए कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू। I think all the questions were answered by our CMD sir and other directors. With that, I will hand over back to Sri Amitabh Mukherjee, our chairman, for concluding remark. Thank you, Praveen. Members may please note that the voting on the NSDL platform will continue to be available for the next 15 minutes. Therefore, members who have not cast their vote or vote yet are requested to do so. The Board of Directors has appointed Shri D. Hanumanta Raju, Practicing Company Secretary, as the scrutinizer to supervise the e-voting process. Further, I hereby authorize the Company Secretary to declare the result of the voting and place the results on the website of the company at the earliest. The resolutions, as set forth in the notice, shall be deemed to be passed today, subject to receipt of requisite number of votes. Thank you all for attending the meeting. Jai Hind. Thank you, sir. I wish to place on record my sincere appreciation and thanks to the chairman and managing director, functional directors, government nominee directors Sri Ashish Chatterjee, Sri Abhijit Narendra, and independent directors Sri Sanjay Tandon, Sri Bharat Patil, Sri Mahendra Singh Rao, and Sri Achal Kumar Sinha. I also would like to thank Sri G. Sarthi Raja, Deputy Secretary, Ministry of Steel, for attending the meeting on behalf of the Honorable President of India and the shareholders, auditors, secretarial auditors, and scrutinizer for their valuable support. I also thank senior management, head of projects, head of departments, and all employees of the NMDC Limited for their hard work for the growth of the company and prosperity of shareholders. I also thank all the teams who have worked for the participation of the annual report, preparation of the annual report for the year 2024-25, and the successful conduct of the AGM directly or indirectly. I would also like to acknowledge the support, cooperation, and guidance received from Ministry of Steel, Ministry of Mines, Ministry of Forest and Environment, Ministry of Corporate Affairs, SEBI, DIPAM, Stock Exchanges NSE, BSE, and Kolkata Stock Exchange, depository participants NSDL, CDSL, our registrar and transfer agent, and the state government of Telangana, Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Jharkhand, and Andhra Pradesh, our customers, suppliers, and all other stakeholders for providing their valuable support consistently to the NMDC. Thank you all for attending the meeting. Jai Hind.